Hi friends, good evening guys. This is CA Lokesh CV. Guys, let me know whether it is audible. Is my voice audible, guys? Okay, so we'll wait for some time. Let others join in. Hi Rajesh. Good evening Rajesh. Good evening Harshita. Okay. Hi Amulya. So my voice is clear, right? Okay, good. तो चलो guys, तो what we are going to discuss, okay, so let's understand that also. तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? सी गाइस, as we know, like we are discussing essay 200 series, right? आज हमारा फोर्थ सेशन है. So whatever is possible we are going to do, okay, as simple as this. Okay, so we have scheduled for some days, so as per that we are planning it out. Okay, so I think CA final audit exam also today it got complete. People were saying like it was tough paper, sir. Okay, I have not gone through, guys. Lekin ha, yes. So I think once I go through that, so I can know about it. Okay. तो चलो guys, तो what we are going to do, हम क्या करने वाले हैं? See, we are going to take up some MCQs. As I have already said this, guys, that is nothing but okay. So all these MCQs. Okay. Chalo guys, so first standard essay 200 what we have discussed, so we will discuss relating to that particular part. Okay, see, I think it's visible, guys. I have made it enlarged, so that's the reason I guess you might be seeing it as bit blur.
okay, because I want you to make sure it is visible to you. ठीक है? चलो, shall we start with the MCQs then? So let's take up the first MCQ, guys. So first one, so let's start with it. Is it visible? Okay, okay. Okay. So chalo, I think there is some issue, guys, I guess. So there might be some issue relating to this because I have opened two files as well. Okay, chalo, otherwise we'll take up the standard. I think it is bit blur. I don't know, some technical reason might be there. Okay, so let's start with the another one, right? So this again we can discuss it tomorrow, guys, not an issue. I hope it's fine. Okay, chalo. Is it okay now? Okay, so chalo, guys, so let's start with this then. See, essay 210 yesterday we were discussing, right? So let's have a small recap. थोड़ा बहुत revise कर लेंगे, फिर we'll move forward. क्योंकि essay 210 is also not yet complete. Okay, so let's understand that. Now essay 210 says what? See, understand here, agreeing the terms of audit engagement. Now when we say agreeing the terms of audit engagement, okay, when we say agreeing the terms of audit engagement means this is discussing with respect to, okay, this is discussing with respect to audit engagement letter. Okay, now what is audit engagement letter? Okay, what is this audit engagement letter? It is nothing but a letter which is written by the auditor and it is given to the client. Okay, so it is written by the auditor and it is given to the client. Now the whole question will arise, okay sir, but what it will contain? उसमें क्या रहेगा sir? What will be contained in audit engagement letter? Guys, to be simple enough, I can say all the terms and conditions related to audit. all the terms and conditions which is related to audit, वो पूरा audit engagement letter में रहेगा. Got clarity here everyone? As simple as this. Now the question arises, TK sir, now for example what we will be writing for this? Yesterday we have already said all these points, guys. Okay, so if you see this, we have specified all this clearly, right? Okay, so like if you see this objective of audit,
Okay, it includes the scope of audit, management's responsibility, auditor's responsibility. Audit is subjected to peer review process by ICAI. Okay, and remuneration which is agreed between the auditor and the client. Okay, so the remuneration part also it is going to get covered. Okay, now whole thing will arise. Okay sir, but we have said the word etc. Now this is important guys, meaning what, whatever the terms, जो भी ऑडिटर को लगेगा कि भाई ये सब इंक्लूड करना बेटर है, तो इन दिस केस व्हाट ही विल डू, ही विल इंक्लूड ऑल दोज इन द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखेगा। अंडरस्टूड दिस। अभी क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है सर एक बार क्लाइंट के पास आए तो क्लाइंट क्या करेगा, अंडरस्टैंड दिस क्लियरली गाइस। नाउ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंड टू द क्लाइंट, क्लाइंट क्या करेगा, उसको पढ़ेगा, ही विल एक्नॉलेजेस इट। ओके, वो एक्नॉलेज करेगा एंड देन ही विल सेंड ए कॉपी बैक टू द ऑडिटर। क्या करेगा वो, ही विल सेंड ए कॉपी बैक टू द ऑडिटर एंड वंस इट इज रिसीव्ड, ओके, देन ओनली ही विल स्टार्ट द ऑडिट। एक बार उसे मिला तब भी वो क्या करेगा, he will start the audit. I hope you are getting the clarity on this. Okay, so that's the reason even with respect to all this. Okay, so I have drawn here also, so keywords also I have written. Okay, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Clear this particular part everyone? Understood? Okay, now question arises, okay sir, see now one question we have discussed it this guys, sir, whether an expert, an auditor who is going to refer, whether that particular point also need to be written in audit engagement letter, क्या audit engagement letter में OB लिखना जरूरी है क्या? Okay, now that is also we have to understand. Now as we have said, yes, that is mandatory also. Okay, that is required as well, because what happens normally, the situation is something like this guys. Okay, so in a case of an audit, okay, so auditor whenever he wants to consult an expert, expert is a third party. Okay, तो इसलिए क्या होगा, you have to take into consideration, you have to take into consideration, you are going to include that point in audit engagement letter as well, उसमें भी हमें include करना ही पड़ेगा। Okay, चलो उसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ए रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट में क्या होगा सर, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ए रिकरिंग ऑडिट? तो गाइस आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट, ओके, इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट, तो रिकरिंग ऑडिट इज नथिंग बट रिपीटेटिव ऑडिट। लास्ट ईयर वी वर द ऑडिटर्स, करेंट ईयर ऑल्सो वी आर द ऑडिटर्स, सो दिस इज अ रिकरिंग ऑडिट। अभी रिकरिंग ऑडिट में क्या होगा, क्वेश्चन अराइजेस वेदर एवरी ईयर वेदर वी शुड इशू न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, आंसर इज नो। ओके, तो एवरी ईयर इशू करना है क्या, नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, it is not required, as simple as this. But let me tell you guys here, but if some situations or conditions exist, okay, situations या फिर conditions if it exists, then we have to issue new audit engagement letter every time. Okay, क्या situations है sir, what are those situations, what are those conditions? Okay, the first one, it includes basically मतलब कैसे कैसे situations में हमें new audit engagement letter देना है सर। फर्स्ट थिंग दे स्पेसिफाई नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस अगर है तो गो फॉर इशूइंग ए न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। सेकेंड थिंग विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द मैनेजमेंट, इफ देयर इज अ चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस, या फिर चेंज इन द मैनेजमेंट, या फिर इफ देयर इज अ चेंज इन TCWG or KMP. So in this case what happens guys, you should go for better issuing a new audit engagement letter. Okay, and उसके अलावा then what happens, okay, if there is a change in the mode of doing the business, okay, अगर कुछ changes है तो in this case what happens guys, you go for issuing a new audit engagement letter. Okay, या फिर you already have a condition in the previous audit engagement letter that okay, whenever you will do the audit, okay, whenever in the next year also, so at that point of time you are going to give a new audit engagement letter, then in this case better go for issuing a new audit engagement letter, है ना, as simple as this. Then question arises, ठीक है सर, apart from this, if the attitude of the client is not proper, अगर आपको लग रहा है कि attitude of the client बराबर नहीं है, तो in this case go for issuing a new audit engagement letter. Okay, या फिर when there is a change which is required by the auditor or required by the client, go for issuing a new audit engagement letter. I hope it's clear guys everyone. Okay, all this we have to take into consideration. बात clear है सबको? Everyone understood? Till yesterday we have discussed this much only, right?
I think there is some technical issues, guys. Maybe I feel it's showing little bit blur, I guess. I think some technical issue might be there. But I think it's visible, right? I hope we can continue the session for today like this. Okay, Harshita. Okay, good. Yeah, I think some technical issues might be there, I guess. But anyways, so I don't want to cancel the class. Okay, Rajesh. Okay, chalo. We'll continue then. Chalo. See, now let's understand the contents of audit engagement letter. Now, what are the contents of audit engagement letter? Okay, see, we have seen already the contents, guys, but we have also said contents of audit engagement letter is given by whom? SA 210 ने दिया है. लेकिन if sometimes if it is given by the law and regulations, if it is given by laws and regulations, question arises, अगर laws and regulations ने दिया है तो what we should do as an auditor? Just I have to obtain an acknowledgement. I have to obtain an acknowledgement from the client saying that he understands his laws and regulations, and thereby auditor is not going to issue audit engagement letter. Okay, I hope you're understanding this. So this is what we have to take into picture. Okay, so this is as simple as this, guys. So you obtain an acknowledgement from the client saying that yes, he understands his laws and regulations, and then what happens? As an auditor, you basically say him that once you give the acknowledgement, I am not going to issue any audit engagement letter. Q sir, array whatever the laws and regulations were there, it was applicable to the client only. Okay, so client has to basically follow his own laws and regulations. So when he knows his laws and regulations, there is again no need to issue audit engagement letter. I hope you are getting the clarity on this. So as simple as this is what you have to know, guys. Clear है बात सबको? चलो. So now after this the question arises. See, here there may be a situation, guys. Now what happens? Okay, so let's understand this very important concept. Okay, first let me explain this, guys, then you can make a note of this. Okay, now they say preconditions for an audit. Okay, now they say preconditions for an audit. Okay, so don't worry, guys. First I will explain. If you want, again I will repeat this. You can make a note of it as well. Okay, I think some technical issue is there, that's why you may not be able to see it properly. Okay, chalo. See, some preconditions for an audit. What are those preconditions for an audit? See, remember there are only two conditions, guys. Okay, before you accept a client as an basically as an auditor, so I'm repeating this, before you accept the client, okay, as I want to accept him as my client as an auditor, then I have to check two conditions. मेरे को दो conditions check करना पड़ेगा, right? First condition is what? Okay, you have to see, boss, whether financial statements is it prepared as per FRF or not. First thing what you have to do, you have to take into account whether financial statements is it prepared as per FRF or not. That is as simple as this. Financial statements are prepared by following FRF or not. This is the first condition you have to check. Second important condition is what? Management's responsibility. Second precondition what you have to see is management's responsibility. Now management's responsibility for what? Okay, for preparation of books of accounts and financial statements
is the responsibility of the management. The first thing is what, see, we have to check management's responsibility as well. Okay, whether management, whether they are going to prepare books of accounts, whether they are going to prepare financial statements, it is the responsibility of the management. This is one of the condition मेरे को check करना पड़ेगा. Okay, तो पहले मैं क्या check कर रहा हूँ, then what is the difference between first and second point sir? सिंपल सी बात है, सी अंडरस्टैंड दिस गाइस. फर्स्ट पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है क्या. सो द फोकस इज ऑन एफआरएफ. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. सेकेंड पॉइंट में क्या है, वेदर मैनेजमेंट इज गोइंग टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन. दैट इज व्हाट आई एम चेकिंग. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से है क्या, वेदर इट इज एज पर द एफआरएफ और नॉट, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू चेक. सेकेंड पॉइंट में प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, हु इज गोइंग टू प्रिपेयर, दैट इज अ सेकेंड पॉइंट. ओके, नॉट ओनली दिस, देन हम ये भी देखेंगे कि भाई क्या वेदर दे आर गोइंग टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स. Internal control systems, whether they are going to take responsibility or not, that also we are going to check. Able to understand this. Internal control systems के लिए क्या responsible लेना चाहते हैं कि नहीं. Okay, because see, if these conditions are present, then only मैं audit को accept करूँगा. Otherwise, I am not going to accept this audit. Please understand this very clearly. Okay, and the third thing basically we have to see whether they will provide all information, whether they will provide additional information, all information, additional information, then unrestricted access to persons in the entity. Okay, so whether they are going to do this activity, मतलब क्या वो ऑडिटर को पूरा इंफॉर्मेशन देने के लिए रेडी है क्या, एंड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेरे को लग रहा है क्या वो प्रोवाइड करने के लिए रेडी है क्या, एंड द थर्ड वन क्या अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने के लिए रेडी है क्या टू द पर्सन्स इन द एंटिटी. मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल सी, यहाँ पे डाउट आ सकता है बच्चों को कि सर व्हेन दे हैव प्रोवाइडेड ऑल इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द नेसेसरी फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन. एडिशनल इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है. सिंपल सी बात है गाइस, जब उन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड किया है तो डोंट यू थिंक दैट उसके अंदर मेरे को कुछ डाउट्स है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मेरे को होना है कि नहीं. येस, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो. सो ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये दोनों मेरे को मिलना है. Apart from this, I should also have unrestricted access to persons in the entity. Meaning what? For example, if I want to inquire any person, अगर मेरे को लग रहा है कि इंक्वायरी करना है, so in this case I should be given access. I hope you're getting the clarity on this. So I should be given access to those people to talk. Like for example, मेरे को लग रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ गलत एंट्री पास हो गए, तो आई शुड बी हैविंग द अथॉरिटी, मेरे को अलो करना है कि अकाउंटेंट को मैं पूछूं व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई डिड यू पास ए रॉन्ग एंट्री, वाज दैट ए फ्रॉड और वाज दैट ए एरर. ये पूछने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे को होना है. ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल. तो इन शॉर्ट गाइज आई कैन से इफ दीज टू कंडीशंस, okay, if these two conditions are present, okay, then accept the audit. If it is absent, then reject the audit. Okay, if it is present, accept the audit. If it is absent, then reject the audit. As simple as is. बात क्लियर है सबको. ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट. क्या प्री कंडीशंस है सर? दो ही कंडीशंस है. एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या एफआरएफ के हिसाब से बना है क्या. सेकंड, मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 3 थिंग्स. हमें क्या देखना है?
तीन चीज़ों का देखना है. What is it? The first one, with respect to preparation of books of accounts and financial statements, is the responsibility of the management. Second one, internal control systems हमें check करना है, मतलब whether they are going to take the responsibility क्या, वो भी हमें देखना है. And the third one, whether they will provide all information to me, whether they will provide additional information to me, and whether unrestricted access is given to me. Whenever I want, I can go for the inquiry. Able to understand this? As simple as this. अगर ये दो conditions present है तो accept करो, अगर ये दो conditions absent है तो reject करो. Simple सी बात है. I hope you understood this, guys. Any doubts are there, you can just let me know. Okay, chalo. See, now you can copy it, guys. I will zoom it for you. Okay. So you can make a note of all this, guys. Don't worry about the time, we have enough time, guys. Okay. So I'm scrolling down, guys. Point by point I will show you, don't worry. Okay, Rajesh. Chalo, I will show it to the next one. Okay.
सो इट इज़ प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट गाइस. तो प्री कंडीशंस क्या है? दो ही कंडीशंस हैं. सो वी हैव ओनली टू कंडीशंस, राइट. तो फर्स्ट वन, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से बनाया है क्या? सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू चेक. सेकेंड थिंग हम क्या देख रहे हैं? मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर सेइंग. नो, मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू टेक इनटू अकाउंट. मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गाइस? ओके, टू टेक इनटू अकाउंट सर्टन एस्पेक्ट्स. First one, क्या preparation of books of accounts, financial statements, whether they are going to do it. Okay. Second thing is what? Internal control systems, whether they are willing to take the responsibility. Okay. Internal control systems के लिए क्या वो responsibility लेना चाहते हैं. And the third thing, auditor को क्या check करना है? Whether they are going to provide all information, additional information, unrestricted access to persons in the entity. Okay, क्या unrestricted access to persons in the entity मतलब whenever auditor wants to inquire, whether they are allowing me to inquire, ये हमें चेक करना है. Okay, अब एक conditions अगर present है, okay, तो we are going to accept the audit, मतलब we are going to accept the client. अगर वो कंडीशंस नहीं है, इवन इफ वन कंडीशन इज ऑल्सो नॉट देयर, तो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द ऑडिट स्ट्रेट अवे. ओके गाइस, व्हाट वी आर डिस्कसिंग, रिमेंबर दिस इज एक्चुअली सेड इन सिंपल टर्म्स, कोऑपरेशन बाय द क्लाइंट. ओके, हम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में वी से दिस, क्लाइंट हैज टू कोऑपरेट इन एन ऑडिट, मतलब यही होता है. ओके, उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जब भी मेरे को डाउट्स है तो एक्सप्लेनेशंस देना पड़ेगा. कभी भी उसको लग रहा है कि ओके, तो लाइक वेन एवर आई फील दैट आई हैव टू इंक्वायर ए पर्सन, देन मेरे को अलो करना पड़ेगा. इसी को हम क्या बोलेंगे इन लेमैन लैंग्वेज, मतलब कॉमन मैन लैंग्वेज में हम इसको कोऑपरेशन बाय द क्लाइंट बोलेंगे. ओके, एज सिंपल एज दिस. ठीक है, आई होप यू हैव रिटन दिस गाइस, एवरीवन. सबने नोटिंग किया है? ओके, गुड अमूल्या. देन ओके हर्षिता, गुड. ओके ओके राजेश, चलो. सो लेट्स मूव टू द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स गाइस. नाउ अभी इसमें एक सिचुएशन ऐसा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके, नाउ व्हाट इज दैट एक्चुअली? सी, नाउ अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट गाइस क्लियरली. ये बात हमेशा याद रखो. ओके, सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस वी आर गोइंग टू टेक, व्हाट इज दैट? नाउ client is requesting the auditor. Okay, first I am writing, मैं फिर explain करूँगा, then you can copy it down. Client is requesting the auditor to change the terms of audit engagement letter, to change the terms of audit engagement letter which was originally accepted by them. Okay, तो understand this situation guys. वो क्या बोल रहा है? Client is requesting the auditor to change the terms of audit engagement letter which was originally accepted. मतलब this was originally accepted, now he wants to make a changes in this. Okay, now क्वेश्चन ये आएगा, देन एज एन ऑडिटर व्हाट आई शुड डू? एज एन ऑडिटर मेरे को क्या करना है? नाउ आई हैव टू सी. ओके, एज एन ऑडिटर, I have to see whether the reasons are justified. As an auditor मेरे को क्या करना है? I have to see whether the reasons are justified. रीजंस क्या जस्टिफाइड है क्या? इफ इट इज यस,
इफ इट इज नो, क्या रीजंस जस्टिफाइड है क्या? इफ इट इज यस देन accept the terms and issue new audit engagement letter. Accept the terms and issue new audit engagement letter, as simple as is. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Okay, if again I am repeating this particular one, so as an auditor if reasons are justified, उन्होंने पूछा है कि सर terms and conditions में कुछ changes लेके आएंगे, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हम चेंज कर देंगे, अगर मेरे को रीजनेबल लग रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हाट इज दैट, आई विल एक्सेप्ट द टर्म्स एंड आई विल इशू न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. अगर अंडरस्टैंड हियर, इफ इट इज नो, ओके, इफ इट इज नो, मेरे को रीजंस अनजस्टिफाइड लग रहा है. नो मीन्स व्हाट, हियर ऑडिटर इज फीलिंग रीजंस आर अनजस्टिफाइड. इट मीन्स रीजंस आर अनजस्टिफाइड. अगर ऐसा लग रहा है, इफ रीजंस आर अनजस्टिफाइड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली. इफ रीजंस आर अनजस्टिफाइड देन we shall not accept the terms, we shall not accept the terms and we will continue the audit which is originally accepted, which is originally accepted between the client and auditor. तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे को लग रहा है कि रीजन से जस्टिफाइड नहीं है, तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो व्हाट आई विल डू गाइस, मैं क्या करूंगा फिर, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स एज सिंपल एज दिस, तो आई विल बेसिकली कंटिन्यू विथ ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. जो मैंने इनिशियली जो मैंने अग्री किया था उसी टर्म्स के हिसाब से मैं ऑडिट करना शुरू करूंगा. ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो मैं इस टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ओरिजिनली जो है आई विल कंटिन्यू विद दिस. लेकिन अभी हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है, इफ क्लाइंट इज नॉट अलोइंग, if client is not allowing to continue with the original audit engagement letter, okay, if client is not allowing to continue with original audit engagement letter, so then I have to take into consideration, मतलब he is not allowing me to do the work at all, मेरे को काम करना ही नहीं दे रहा है वो. अगर ऐसा है तो now in this case you can better go for the resignation. लेकिन हाँ, I am putting a star mark here, resign only when it is permitted by the law. For example, if it is prohibited by the law, okay, law ने prohibit किया है saying that you cannot resign, अगर ऐसा situation है तो in this case I will show the effect on the audit report. See, now you may get a doubt, sir ऐसा कुछ लॉ है क्या, अभी तक तो नहीं है. ओके, तो अगर कुछ ऐसा है, तो अगर इफ क्लाइंट इज नॉट अलोइंग मी टू डू द ऑडिट, ओके, ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के हिसाब से वो मेरे को अलो नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, उस टाइम पे एज सिंपल एज एस, ओके, तो आई विल रिजाइन फ्रॉम द ऑडिट. मेरे को ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के हिसाब से अलो नहीं कर रहा है, तो आई विल रिजाइन फ्रॉम द ऑडिट. लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखो, इफ आई एम नॉट एबल टू रिजाइन, देन इन दिस केस आई विल शो द इफेक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट. मैं ऑडिट रिपोर्ट पे अपना इफेक्ट दिखाऊंगा. आई होप यू आर क्लियर विद दिस एवरीवन. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द सिचुएशंस व्हिच यू हैव टू हैंडल इट गाइस. इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इसीलिए मैंने चार्ट वाइज यहाँ पे लिखा है ताकि आपको आसान हो जाएगी. ओके, सो दिस इज कंप्लीटली व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज फॉर May 21 या November 21 एग्जाम्स के लिए. ओके, इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चंस भी है, MCQ क्वेश्चंस भी है. So as the time permits, whatever is possible, definitely I will try to do that. Okay, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे चीज़ें हैं गाइस यहाँ पे, वी हैव टू नो. मेरा यहाँ पे फोकस क्या है, टू मेक यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट, एंड उसके साथ MCQs जो भी है, तो ICA ने जहाँ जहाँ पे भी दिया है, आई एम ट्राइंग टू गैदर इट एट वन प्लेस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, चलो, सो फर्स्ट आई वॉन्ट यू टू मेक ए नोट ऑफ ऑल दिस गाइस. आराम से लिख लेना, अर्जेंट नहीं है.
मैं एनलार्ज भी कर देता हूँ, आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट. Okay, so make a note of this, guys. तो धीरे धीरे आई विल स्क्रॉल डाउन, गाइस, आप आराम से लिख लीजिए, बिकॉज सी दिस व्हाट वी आर राइटिंग इज ए समरी नोट्स, यही आपको यूज़ होने वाला है. ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या client is requesting the auditor to change the terms of audit engagement letter. तो नीचे मैंने लिखा है ओरिजिनली एक्सेप्टेड, मतलब इनिशियली जो एक्सेप्ट किया है उसको वो चेंज करने के लिए पूछ रहा है. ओके राजेश, गुड. लेट्स वेट फॉर अदर्स ऑल्सो, फिर मैं स्क्रॉल करूँगा थोड़ा. ओके चलो, गुड गुड. सी नाउ यू कैन राइट डाउन दिस. तो पहले ए लिखो, एज एन ऑडिटर रीजंस आर जस्टिफाइड. फिर मैं चार्ट दिखाऊंगा. यू कैन कंप्लीट ईच पार्ट. ठीक है. ओके, तो एक्सेप्ट द टर्म्स, इशू न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. यस के यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेप्ट द टर्म्स, इशू न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. मैंने एनलार्ज किया है तो यू विल बी सीइंग लिटिल बिट ब्लर ओनली. ओके, तो नो सेट दिखा दे रहा हूँ मैं अभी. तो इफ इट इज नो तो क्या करना है.
इट इज़ ए बिग वन गाइस, पहले आप नोट कर लीजिए इतना तक, फिर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। Okay. So we shall not accept the terms and we will continue the audit which is originally accepted between the client and auditor. मैं आपके लिए रीड भी कर रहा हूँ दोस्तों. In case अगर client is not allowing to continue with original audit engagement letter, अगर वो मेरे को अलो नहीं कर रहा है कि भाई तुम ऑडिट ही नहीं कर सकते, या तो टर्म्स को एक्सेप्ट करो या फिर तुम ऑडिट ही नहीं कर सकते, अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो व्हाट विल हैपन? ओके, चलो आई एम स्क्रॉलिंग इट डाउन. तो हम रिजाइन करेंगे. इफ इट इज स्टार मार्क डाला है मैंने, क्यों? इफ लॉ डजंट अलो देन इन दिस केस व्हाट हैपेंस गाइस? अगर लॉ अलो नहीं कर रहा है, इफ लॉ इज नॉट अलोइंग यू टू कंटिन्यू, मतलब इफ लॉ ने बोला है कि भाई तुम रिजाइन नहीं कर सकते, देन इन दिस केस नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अदरवाइज यू रिजाइन. सी, जब क्लाइंट इज नॉट अलोइंग यू टू डू द ऑडिट तो हम क्या करेंगे? रिजाइन कर देंगे. लेकिन हाँ, लॉ ने बोला है तुम रिजाइन ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लॉ है क्या अभी तक? अभी तक तो नहीं है. ओके, अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया तो इन दिस केस यू विल शो द इफेक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट पे अपना इफेक्ट दिखाएंगे. आई होप बात क्लियर है सबको. So once you have noted this, let me know guys. Okay Rajesh, good. Okay Amalya, good. Okay Harshita, good. Okay, चलो. सी, दीज वर द टू स्टैंडर्ड्स जो हमने डिस्कस किया था.
ओके, ऐसे 200 वी हैव डिस्कस्ड एंड ऐसे 210 वी हैव डिस्कस्ड. बहुत सारा क्वेश्चंस है गाइस विच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट. ओके, तो मतलब क्वेश्चंस इन द सेंस एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, हम कल के क्लास में विल ट्राई टू सॉल्व दैट. ओके, तो एज सिंपल एज दिस. ओके, चलो, सी नाउ व्हाट वी विल डू. नाउ वी हैव अनदर ओके, अनदर वन स्मॉल एमसीक्यू जो आईसीए ने नहीं दिया है, जो खुद मैंने बनाया है. ओके, सो दैट वी विल टेक इट आउट गाइस, सो दैट आपको भी थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा, राइट. सो दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग अप अ स्मॉल एमसीक्यू. इजी रहेगा, डोंट वरी. पहले मैं लिखूंगा, बाद में आप कॉपी कर सकते हैं उसको. सिंपल क्वेश्चन रहेगा गाइस, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. ओके, a small MCQ guys. See, first you can note down guys, don't worry. आप पहले लिख लीजिए, बाद में हम डिस्कस करेंगे. आई एम एनलार्जिंग इट फॉर यू. जूम कर रहा हूँ मैं. तो क्वेश्चन क्या है? ऑडिटर शुड ऑब्टेन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट एंड ऑल्सो ए कंफर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ द ऑडिट. पहले इतने चीज़ को लिख लीजिए आप, बाद में ऑप्शंस में बताऊंगा. Okay, the options. The above statement is true. The above statement has no relevance to the audit. The above statement is false. None of the above.
ओके तो वंस यू राइट दिस देन आप आंसर बोल सकते हैं गाइस। सिंपल सा क्वेश्चन है। हर्षिता सेज ऑप्शन सी। ओके हर्षिता। ओके विल वेट फॉर अदर्स ऑल्सो। तो देखेंगे उन लोग क्या आंसर देते हैं। राजेश सेज द स्टेटमेंट इज फॉल्स सर। ओके राजेश, तो मतलब ऑप्शन सी बोल रहे तुम। ओके गुड। अदर्स जो भी ऑनलाइन में है यू कैन आंसर दिस। अमूल्य सेज आंसर इज ऑप्शन सी। ओके अमूल्य गुड। तो चलो गाइस, तो ये क्या है एक्चुअली, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। सी सिंपल सी फंडा है कि क्या है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कब लेना है ऑडिटर को। अगर आपको पूरा स्टैंडर्ड मैंने कल भी एक्सप्लेन किया, आज भी मैंने रिकैप भी किया है। ओके ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर को कब लेना है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट। मतलब क्या है यहाँ पे, सीट सिंपल थिंग, ऑडिटर पहले क्लाइंट को लिखेगा, लेटर लिखेगा, एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद ही तो ऑडिट शुरू करेगा। तो इट इज ऑब्वियसली इट इज बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट ही हैज टू टेक इट। ओके अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई ओके नाउ यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द मैनेजमेंट कंफर्मेशन ऑल्सो। कंफर्मेशन किस चीज के लिए, देर इज नो नीड ऑफ एनी कंफर्मेशन। Let me make it very clear. Confirmation from the management at the end of the audit. What confirmation we require? Not at all. कि audit engagement letter क्या फिर से confirm करना है? No. It is only required at the start of audit. तो I hope you are getting this. तो start of audit में ही required है. It's not required at the end of the audit. बात clear है सबको? तो it is as simple as this. You have to make this as a point. ओके तो अभी ऑप्शंस अगर हम देख रहे हैं तो अबो स्टेटमेंट इज ट्रू, नो इट इज नॉट ट्रू। ओके सो दिस इज रॉन्ग। सो ऑप्शन बी बोल रहे द अबो स्टेटमेंट हैज नो रिलेवेंस टू द ऑडिट। क्यों रिलेवेंस, बेसिकली सी दे हैव गिवन सम कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। ए बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देन दे स्पेसिफाई द अबो स्टेटमेंट इज फॉल्स। यस नो दिस इज द आंसर। ओके बिकॉज वी नो, हमें मालूम है कि ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट ही हमें लेना है, नॉट एट द एंड। एंड में फिर से दोबारा कुछ कंफर्मेशन, फिर से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, नो नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। बात क्लियर है ये सबको। नन ऑफ द अबो, ए भी गलत है क्योंकि इसमें एक आंसर तो है। ओके तो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो ऑप्शन डी ऑब्वियसली इज नॉट द राइट आंसर। ओके सो ऑल दिस इज व्हाट वी हैव टू नो गाइस। ओके एक छोटा सा एमसीक्यू था। Again this is basically given by me, not by ICAI. Okay चलो guys, I hope you enjoyed the session. तो कुछ doubts है तो please you can put it here. Okay Amelia, my pleasure. Okay I guess no other doubts are there. Okay Harshita, my pleasure. Have a nice day too. Okay guys, please do revise this. कल के क्लास आने से पहले रिवाइज कर लीजिए। ओके ओके राजेश, चलो टेक केयर देन। टुमारो विल मीट अप गाइस। थैंक यू।